never ever concerned about my plan B. It's kind of ठीक है, जो होगा कुछ ना कुछ तो कर लेंगे लाइफ में. Because throughout my schooling days, college, school से बाहर कहीं भी, wherever I have been, I've put a lot of effort into learning and developing my communication skills, how to talk with people. This is one thing that is going to give you a lot of edge over others. And even if you become an IAS officer, you will see many IAS officers. Not all are equally well spoken. Some becomes very famous. कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता कि कहाँ गए. In your interview, you will see some people score. The variation in interviews is very huge. So you have to work upon your communication skills. GD is not always group discussion. हम लोगों को हमारे टीचर ने पढ़ाया सबसे पहले. She gave us proper notes about these. Group discussion is not about knowledge. पहली बात ये समझना चाहिए. It's the purpose of group discussion is not to prove your point that I know something and I am right and I can defeat you. The purpose of a discussion is to create new knowledge, gain something new, develop a new perspective about the things. So it doesn't matter how well read you are. In history, we have seen people like Akbar. कुछ नहीं पढ़ा बेचारे ने, but he has that skills to invite scholars throughout the world, not just India, and discuss and debate with them and create something new. So it is a platform which teach you leadership skill. No, if you will go for SSB, if you will give CDS के बाद SSB होता है. बहुत लोगों ने दिया होगा, कल भी मैं कह रहा था कि देना है एग्जाम. So one of the, you will be surprised, जिसने दिया है, on first day you will go through GD. On the second day you will have half discussion, or second और third day में एक half discussion होगा. फिर तुमको एक स्पीच देना होगा. फिर ग्रुप डिस्कशन में वो टास्क देंगे और फिर वहां पे तुमको करना है ग्रुप डिस्कस करके एक सॉल्यूशन फाइंड करना है प्रॉब्लम का. So at least at 4 stages they are giving you this opportunity to speak something, participate in a group or command a group. Now, why do you think a job like military, army, air force needs so much emphasis, gives so much emphasis on speaking? If it's about knowledge, if it would have been about knowledge, तो वो भी यूपीएससी टाइप एक एग्जाम कंडक्ट कर सकते थे, मेंस लिखवा लेते हैं, वो कर लेते हैं. लेकिन ये इतना स्पीकिंग क्यों करवा रहे हैं? They're not interested in knowing your level of knowledge. They want leaders, because as a captain, as a army personnel, you need to lead a team. You need to inspire the people. You need to be so much inspiring that people can give their life on your command. So group discussion is about leadership. It's least about knowledge. बिहार वाले ग्रुप में क्या हुआ? I'm just discussing. The person who was supposed to be in charge of the group, उनका नेटवर्क कुछ गड़बड़ था, whatever the reason, she was not able to control the group in the effective manner, but then others were waiting. यूपी में भी ऐसा ही हुआ, like everybody was waiting कि कोई तो शुरू करे, क्या करना है. महाराष्ट्र में भी लगभग यही चल रहा था कि कोई तो शुरू करे. If you have ever participated in any of these group discussions, I was there. पहले दिन तो मुझे भी ऐसा झटका लगा कि अच्छा ऐसा होता है क्या. I have read, I have participated a lot in debates and all, but the level of competitiveness that I saw here, like the
referee, umpire, or whosoever will say ki start, and four people will jump at you. Like you have to sneak in, find your time कि मुझे 1 मिनट कुछ बोलने के लिए मिल जाए. So there is this always this attitude that and it's up to a certain extent it's true that whosoever starts first gets amazed. Leadership का पहला quality क्या है? You should you should take the lead. So there people will jump. People will not ask you कि आप भी बोलना चाहते हैं क्या कुछ. So नहीं नहीं योगेश, ऐसा कुछ नहीं होता है. Now, so take group discussions in that spirit, okay? And along with that, since we are preparing for UPSC, we can select topics where it can be a knowledge improvement for all of us. I hope in UP many people learn many new things about. किन लोग जिन पार्टिसिपेट किया था, यू गाइस आर हियर, वाज इट यूजफुल, बेनिफिशियल, थोड़ा लगा कि अच्छा है करके करना चाहिए? कोई नहीं है यूपी में. सो साइड बाय साइड यू कैन लर्न. तो इसको करो. नहीं, आई कांट पुश यू कि जब ये इट्स नॉट a school or a college where I can punish you or I can force you that you have to go through an exam and you have to do this. It's up to you guys. किसी मेरी से अगर कुछ सीख सकते हो तो आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. बोलो कि सर आप अपने बारे में ही सिर्फ बात करते रहते हो. सो देयर वाज अ साइंस फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन दरभंगा. दरभंगा नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है, कुछ लोग यहाँ दरभंगा से होंगे भी. दैट साइंस फेयर अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन है, run by one of the friends of APJ Abdul Kalam. He was personally interested into all those. So science fair was organized and the dignitaries were APJ Abdul Kalam himself, and our CM Nitish Kumar also came. Now Abdul Kalam has a special request that I don't want police inside the stadium or in amongst the kids, because then they will not feel comfortable and will not be probably express themselves. So all the management inside the stadium, बाहर से जो पुलिस रखना है गेट पे रख लो वगैरह, inside the stadium should be given to students. Now students कौन? तो generally in our country NCC and NSS. So मैं NSS में था उस समय. I was in first year and NSS was dead. Everybody wants to join NCC. NCC has a lot of craze and attraction to it. NSS, many people even don't know what it is, why it is exist. So since nobody was there, I got into contact of the teacher because I was curious. I read the notice. I went to him. I asked, "Sir, क्या है?" उन्हें कोई नहीं है, मैं ही हूँ. मैं कि सर तो मैं हूँ, चलिए करते हैं कुछ. I was just in first year, very new to the place, very new to the college. Okay, ठीक है. So since nobody was there, I was default the first man, so I became the team leader. By default, कोई था ही नहीं तो. Although the team leader post should be given to second year or third year, तो कोई नहीं था तो I became the team leader. We recruited, we then थोड़ा campaign किए, बहुत लोग आ गए, and then 15-20 students from both NCC and NSS were sent to the stadium to control all those things, all the management and all. The idea was that NSS will lead, NCC वाले तो बस नाम के लिए गए थे. हुआ उल्टा. I took the command in my hand. कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ volunteers रहेंगे. थोड़ा सा पंगा भी था वो NCC का. क्या हुआ था कि when
I also went for the first time कि चलो एनसीसी ज्वाइन करते हैं, बट एनसीसी का जो हेड था उस समय, स्टूडेंट हेड, वाज वेरी क्लोज टू द टीचर, एंड वो ऐसा अपने आप को प्रिंसिपल समझता था। तो उसने मुझे ऐसा बोल दिया था कि अरे अभी कुछ हुआ था एंड आई वाज नॉट एबल टू ज्वाइन बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। इस दिन मौका मिला मुझे कि आई एम आल्सो टीम लीडर, यू आर आल्सो कैप्टन। ने कि एनसीसी वालों का काम क्या है? आपका काम है सिक्योरिटी, आप जाइए गेट पे, अंदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख लेंगे। So we did a lot of things, but the मजेदार चीज क्या हुई कि on the in the evening, sorry, in the lunch time, there was जो लगभग 1,000 के आसपास बच्चे जो थे वो प्रेजेंट करने आए थे, एंड 10,000 people at least would have come daily to visit this, और मेगा शो था। अब 1,000 बच्चों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड दे हैड देयर whole setup. They did not needed us, but it was so disorganized कि वो 1 घंटे के अंदर सबको खाना बांट के और कैसे फिर से साइंस फेयर स्टार्ट कर लें। इट वाज लाइक दे हैड वेरी लेस अमाउंट ऑफ पीपल और कुछ सिस्टम नहीं था। मैंने कहा कि आप ये काम छोड़िए, आई विल डू दिस। आई ऑर्गेनाइज एवरीथिंग अकॉर्डिंगली, आई हैड सम एक्सपीरियंस, जो भी अपना स्कूल कॉलेज का जो भी एक्सपीरियंस रहा, आई पुट एवरीथिंग देयर। वी ओपन 3-4 काउंटर्स, एंड बहुत मजेदार तरीके से कूपन बटा, नॉट गोइंग इनटू ऑल दोस डिबेट, एंड विद इन एन आवर 1,000 लोगों को कूपन बटा, खाना बटा, सिस्टम खत्म हुआ। फिर ऐसा हुआ शाम को दूसरे दिन जब छुट्टी होनी थी, तो नाउ पेरेंट्स वर वेरी वरीड बिकॉज उसी दिन शाम के टाइम में नाउ पेरेंट्स वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू the campus. I don't know why, because visitors are coming, why parents can't come, but somehow the police on the gate were not allowing the parents to come inside, and they were worried कि 4 बज गए, हमारे बच्चों का क्या होगा, और बाहर से लग रहा था कि एकदम से ऐसा रिवोल्ट शुरू हो जाएगा, एंड nobody was taking care, क्योंकि वो पुलिस को पता नहीं है कि अंदर कौन काम कर रहे हैं, और अंदर वालों को पता नहीं कि गेट पे क्या हो रहा है। मैं ऐसा घूम रहा हूँ, पता चला कि अच्छा ऐसा हो रहा है। आई रन बैक टू द ऑर्गेनाइजर्स, आई आस्क देम कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दे आर नॉट अलाउड टू एंटर। सो वी अनाउंस फ्रॉम द माइक, डोंट वरी, आपको ओपन किया जाएगा, इतना सब सेटल हो गया। सो द पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दिस थिंग टू दरभंगा वाज MC Verma. If you'll search his name, he had worked, he's a very good friend of APJ Abdul Kalam. साथ में इन्होंने DRDO में काम किया था, एंड होल थ्रू द टाइम ही वाज देयर, ही वाज वाचिंग ऑल दिस। बहुत ओल्ड, अभी तो नहीं है। आफ्टर ऑन द थर्ड डे द साइंस फेयर एंडेड, इन्होंने पर्सनली सबको ऑटोग्राफ दे रहे थे, मुझे भी एक ऑटोग्राफ दे दिया। आई वाज आल्सो हैप्पी कि ठीक है। बट व्हेन वी केम बैक टू आवर कॉलेज, ही कॉल्ड माय प्रोफेसर एंड ही आस्क्ड कि वो लड़का कौन था, उसको बुलाइए। एंड पर्सनली फिर बात की, उन्होंने कहा कि आई सीन यू, आई सीन यू वर्किंग देयर। कुछ भी मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं थी, मेरा काम था वहां खड़े रहना, कुछ कैओस नहीं हुआ। आई कुड हैव लाइक इजीली सेट कि ये सब काम तो मैनेजमेंट का है, मैं यहाँ क्यों, मैं बस हूँ। बट लीडरशिप इज नॉट अबाउट कि आपको कुछ कहा जाए और आप वो काम कीजिए, वो तो फॉलोअर का काम है ना। यू आर इंस्ट्रक्टेड टू डू समथिंग एंड यू जस्ट डू वट एवर योर पार्ट इज। लीडर्स take the opportunity, they take the challenge and try to solve those problems. बट तुम बस ये सोचोगे कि मुझे ये रोल मिला है, मैं यही करूंगा, तो फिर लाइफ में बहुत आगे नहीं जा सकते। Take those opportunities, and then people will recognize, and you will also recognize yourself that you have all that capability to do wonderful things. दिखाऊंगा मैं कुछ पिक्चर्स एपीजे अब्दुल कलाम के उस टाइम के मेरे पास हैं, एंड द सिचुएशन वर रियली ग्रिम। कुछ मैनेजमेंट नहीं था, अब इतने बच्चे आ गए हैं, पंडाल बहुत छोटा है, और एपीजे अब्दुल कलाम, आई हैड पिक्चर्स विद हिम, वी आर वॉकिंग साइड बाय साइड। तो अभी वो स्टेज छोड़ के ही केम अमॉन्ग द चिल्ड्रंस। नाउ यू नो बच्चे कैसे होते हैं, वो सब रस कर रहे हैं कि प्रणाम कर लें, एक थोड़ा सा टच कर लें, एंड देयर इज नो वन। लाइक पुलिस को तो पहले ही मना है कि नहीं आना है, एंड वी आर लाइक 10-20 वॉलंटियर्स देयर, सबको कैसे क्राउड को कंट्रोल करना है। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, वी डिड दैट।
एंड उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में. व्हेनेवर यू वेर एवर यू गो, यू यू कीप रिमेम्बरिंग दैट कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया था. तो टेक दैट अपॉर्चुनिटी. अभी इसीलिए वो ग्रुप बना है. जीडी करने के पीछे मकसद है, आई वांट टू आइडेंटिफाई दोज पीपल हु आर विलिंग टू टेक इनिशिएटिव्स, दोज हु थिंक कि कुछ अच्छा किया जा सकता है. ये एनसीईआरटी कोर्स क्या चल रहा है? Don't you think it's just an extension of what I was doing in this stadium? There is a problem, and I see that I can solve that, and I'm solving that. Same attitude, कुछ अंतर नहीं है. So be a leader. Develop that attitude. It's not just about reading, mugging up 5 books and qualifying the exam. ठीक है, बात आई समझ में? इट्स एन अपॉर्चुनिटी साक्षी. जब कोई नहीं होता है, when the leader is not present, क्या हुआ? क्रिकेट आज मैच चल रहा है. Everybody is thinking that Virat Kohli is the captain, but when Rohit Sharma got the opportunity, he proved that he can be a better captain. So you have to be ready to utilize that opportunity. You will not always get the opportunity. मिल गया तो समझो you are lucky. Mahendra Singh Dhoni got that opportunity because Tendulkar was not ready to lead, and senior members were like कि पता नहीं क्या होगा, करियर बैटिंग इन्फ्लुएंस होता है, इम्पैक्ट होता है. ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी, प्रूव्ड हिमसेल्फ. अगर वो भी बोलता है कि नहीं यार ये बड़े बड़े लोग नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा, तो चलो. टुडे we are going to start climatology. You will find many questions from this, both in prelims and mains. Very complicated topic. So pay a little bit more attention, extra attention here. Now, this first chapter about this unit, climatology में क्या क्या पढ़ना है हमने अपने को. We will read about atmosphere. That part we have done. We'll read about insolation. We have got through the basics, but today we will go deeper into insolation. Then we will read about pressure and pressure belts, which we have avoided till now. Then we will read about precipitation. What is dew, frost, fog, mist, cloud? बहुत confusion होता है. What is dew? What is frost? What is fog? So we will read those things. And then we will read world climates. ठीक है, this is your overall syllabus of climatology. Okay. Chapter number 8, composition and structure of atmosphere. We have read this chapter before. T-shirt में थर्मल टेम्परेचर कैसा ऊपर नीचे होता है, ये भी हमने देख लिया है. सर जिगजैग पैटर्न, एक बार घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा. Now chapter number 9 is the chapter where the fun begins. This is going to be very tough. अच्छा, एक बात बताओ मुझे, when most of you are here, it's 1:35. Can we take the class from the next Saturday on 10 a.m.? I was thinking why we are doing at 12. Can't we do it at 10? 10 बजे से कर सकते हैं ना? Anybody जिसको प्रॉब्लम है कि 10 बजे से करेंगे तो सर इश्यू हो सकता है. जिनको जो जो ओके हैं, आई नो, डू नॉट नीड टू रिप्लाई. जो उनको प्रॉब्लम है कि
10 बजे से, because I think that will be better. We do it from 10 to 12, take some rest, have your lunch, and then come back at 2 around something. तो बीच में जो बहुत लोगों का भी खाना खाने के बाद नींद आ रही होगी, शायद वो भी ना आए that time. It will be better, I think. संतोष को प्रॉब्लम है. Some of you have colleges. Many of you have colleges. ठीक है, तब we will continue with 12 only. देखते हैं. Anyway, so let's start this. And अगर बीच में किसी को नींद आने लगे तो बोलना मुझे. नींद की दवाई है मेरे पास. ठीक है. डोंट फील साई. बोलना कि सर थोड़ी नींद आ रही है, तो फिर बताऊंगा कि क्या करना है. So what we are going to read in this chapter is the chapter explains the process of heating and cooling of atmosphere and the resultant temperature distribution over the Earth's surface. Process of heating and cooling देखेंगे कैसे atmosphere heat और cool होता है, and because of that how the temperature distribution happens over Earth's surface. या संडे को 10 बजे से कर सकते हैं. Let that be. अब वो डिस्कशन खत्म करो. Come back here and focus. So solar radiation. Now, Earth receives a lot of its energy in the form of short waves. You should remember this. Most of you are from arts or commerce background. So to knowing what is a short wave and what is a long wave may become a little bit difficult, but you should know. Short waves, साइंस वाले बताओ शॉर्ट वेव क्या होता है. शॉर्ट वेव हैज शॉर्ट, अच्छा, शॉर्ट वेवलेंथ्स. इसको वेव लेंथ बोलते हैं. एक यहां से यहां तक एक वेव यहां से चलना शुरू होता है और एक चक्कर लगाता है. दिस इज वेव लेंथ. एक पूरा चक्कर यहां से यहाँ. नाउ अगर कोई वेव का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर दैट. यहाँ से इतना ज्यादा टाइम लगेगा. इफ वेवलेंथ विल बी शॉर्ट, so it will be covering the same distance in very quick time. ऐसा बहुत जल्दी से एक चक्कर पूरा कर ले तो ऐसे बहुत तेजी से ऊपर नीचे होगा. तो हायर, the smaller the wavelength, higher will be frequency. ठीक है. एक फॉर्मूला होता है, you should know this. If you do not know, then just try to keep this in mind कि energy is proportional to frequency. E is equal to h nu, ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ते हैं साइंस वाले, if you remember this. So basically this formula means that energy is proportional to frequency. So जो वेव जितना ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा होगा, क्या होता है, बच्चा कोई बहुत चंचल होता है तो क्या करता है, जिसके पास बहुत एनर्जी है वो कूदता रहेगा, वो माँ बाप को परेशान कर देगा एकदम. तो वैसे ही है, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, if so it's jumping very up and quickly, very fast jumping up and down, it will have a lot of energy. ठीक है. आर्ट्स वालों को दिक्कत नहीं हो रही इतने में. ज्यादा एनर्जी, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया क्या है और एनर्जी क्या है. ठीक है. नाउ द एनर्जी which is coming from sun, the lights which are coming from sun, they have a lot of energy. तो इनका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा. हाई एनर्जी मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी.
High frequency means short wavelength. ठीक है? Can you relate this? High energy, high frequency, short wavelength. Clear? Sorry, कहाँ गया? So so energy that is coming from sun will be of very short wavelength. Now that same energy is falling upon earth. After that, earth is reflecting that energy back. So it will have lesser energy. Sun, earth तो उतना heat नहीं देगा ना. Some of this falling energy will be absorbed and some of it will be reflected. So this will have low energy. So it will have low frequency. That's why it will have high wavelength. ठीक है? कई बार साइंस वालों को भी छोटी सी बात नहीं समझ में आती है. This is very easy, very technical, but many a times we do not read it like this. क्या साइंस तो सबने पढ़ा होगा, इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा. So high energy, high frequency, short wavelength, low energy, low frequency, high wavelength. Now our atmosphere is like a window. It's not a door. Think of it like a window. From this window, the short wavelength energy, short wavelength waves of short wavelengths will pass. इस short wavelengths को आने देगा. But एक बार ये जब अर्थ से टकरा के वापस जा रहा है, so it has become long and it will not allow it to pass. So it will be reflected back. Now, if you have understood this, you have understood the whole concept of greenhouse effect. Congratulations. This is your earth. Sunlight is coming. Your atmosphere is the window. It is allowing the short waves to come. It is then it's being reflected. This reflected wave is of higher wavelengths. This will not be reflected and it will be trapped. So energy which is coming from the sun is trapped inside the earth's surface because of this atmosphere. Similarly, in a greenhouse is made up of plastic covers. The same thing is done by the greenhouse. They will allow the sun rays to come in of shorter wavelengths, but when it will be reflected by the surface, it will not allow the higher wavelengths to pass. So dhire dhire, although here you have a colder temperature, inside the greenhouse you will have high temperature. Similarly, you might have seen, if you have ever been into a car, if you leave your car windows closed on a summer day, when you go back to the car, your car is super heat. Once even the outside the temperature is not that high, but inside the temperature will be very high. That's because of the same phenomena. Glass also acts on the same principle. It will allow the short wavelengths to come in, but it will not allow the high wavelengths to go out. In US, one of the very common reasons for the death of infants is their mothers leaving their kids in a closed car. Temperature इतना ज़्यादा बढ़ जाता है. And there are laws
that you cannot leave your child, your kid, in a car alone. Greenhouse is clear? इतने अच्छे से ग्रीन हाउस नहीं समझ में आया होगा, आई होप अब एकदम से पूरा क्लियर है हाउ ग्रीन हाउस वर्क. So moving forward, the energy received by the earth is known as incoming solar radiation or insolation. We have read this, right? Insolation is a short form of incoming solar radiation. Now, what does it say? These are not important, but you can read. On an average, Earth receives 1.4 calories per square centimeter per minute at the top of its atmosphere. ऊपर कितना है? पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में हर मिनट में 1.94 कैलोरीज अर्थ रिसीव करता है. Now, that solar output received at the top varies slightly in a year due to variation in the distance between Earth and Sun. So many a times, some of you asked me this question as well, that when Earth is traveling around Sun, it travels in an elliptical path. So on perihelion, peri matlab pass मैंने बताया था, तो on a perihelion day, this Earth will be closer to the Sun, and on aphelion, this aphelion days, the sun will be, sorry, Earth will be farther than the Sun. कितने का अंतर है? On this day, it is 152 million kilometers, and here it is 147 million kilometers. So, aphelion is occurring on 4th July. So, on 4th July. And perihelion is occurring on, कहाँ गया? 3rd January. So, but in North, we see that 4th July is one of the hottest day. 3rd January is one of the coldest day. I have told you that the distance from the sun do not have much influence on the weather pattern of our Earth. क्या कह रहा है कि the solar variation, this variation in the solar output does not have great effect on daily weather change on the surface of Earth, because this difference is kind of compensated by different other geographical phenomena. ठीक है? Now, variability of isolation at the surface of Earth. How different regions will get different insolations. Isolation मैंने बोल दिया गलती से, isolation मत बोलना, it's insolation. ठीक है? So these are some of the factors which decide that which part of the Earth will get how much solar radiation. The factors are, first you should know the factors, because this kind of questions can come in mains where you have to explain. So if you know the factors, you remember them, you can write the answer very easily. So first one is rotation of Earth on its axis. एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे कैसे होता है. First one is rotation of Earth on its axis. Second one is angle of inclination of the sun rays, length of the day, transparency of the atmosphere, and fifth one is configuration of land in terms of its aspect. So most important of all these factors is the first and the second one. The fact that
Earth's axis makes an angle of 66.5 with the plane of its orbit around the sun has a greater influence on the amount of insolation received at different latitudes. हमने क्या देखा था? Earth is inclined at an angle of 66.5 on this orbital plane. Because of this, different parts of the earth will receive different amount of heat. ये हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था डेज एंड नाइट के भी कॉन्टेक्स्ट में. So the part which is directly at a 90-degree angle will receive more energy. Second क्या कह रहा है? The second factor that determines the amount of insolation received is the angle of inclination of the rays. It depends upon the latitude of a place. कितना insolation मिलेगा? It depends upon the latitude. So higher you will go, the greater will be the angle of incidence. If the angle of incidence is more, क्या बोल रहा है? If more area is covered, the energy gets distributed and the net energy received per unit decreases. जो हमने बहुत आसानी से 6 वाले बुक में पढ़ा था. If it's an inclined surface, the same beam of light will get distributed over larger area, so per unit area will be less, per unit energy will be less. One more factor which is added here is slant rays. ये जो तिरछी रेखाएं आएंगी, let's suppose this is Earth's atmosphere. So a slant ray will have to pass through a longer area at a greater depth into the atmosphere, because the atmosphere absorb, scatter or diffuse the energy. The energy which will finally be reaching at this point will be less. सोलर एनर्जी जो आ रही है, ये यहाँ क्या हो रहा है? जितना ज्यादा डेप्थ में जाएगा, जितना ज्यादा टाइम इट विल स्पेंड in the atmosphere, the more absorption, more scattering or more diffusion will happen. And that's why finally at this point, even though sunlight is reaching, but it has very less energy. Now within the troposphere, water vapor, ozone and other gases absorb much of the near infrared radiations. Infrared क्या होता है? Now if you see the light, electromagnetic spectrum, बहुत लोगों ने पहली बार अब ये नाम सुना होगा. There is a term called electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum is a spectrum of all the electromagnetic waves. Light is, थोड़ा बहुत science, light is also an electromagnetic wave. Now, if you don't know about wave, you should go and read about waves. There are two kinds of waves: latitudinal waves, longitudinal waves. Electromagnetic waves. Sound कैसा मूव करता है? हमने देखा था. Sound ऐसा contraction and expansion के फॉर्म में मूव करता है. It will shrink and spread and move parallel to the direction. उसी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं. I'm not going into this, नहीं तो नॉन साइंस वाले थोड़ा सा एक बार जाके पढ़ो, ठीक है? So light is an electromagnetic wave. इसी में spectrum, this is very very important. You should know about electromagnetic spectrum. That's why I'm hinting here, so that तुम्हें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आए और जाके एक बार देखो. So light is a part of your electromagnetic spectrum. In this only you have all the waves. There's microwaves, radio waves, और हल्क किसी ने देखा है हल्क वाली मूवी?
screen not visible? Screen is visible to all. Screen दिख रहा है ना सबको? हल किसी ने देखा है कि नहीं देखा? अभी 2 क्वेश्चंस एक साथ हो गए तो कंफ्यूजन हो गया. ठीक है, तो हल्क हल्क को कौन सा रेडिएशन लगा था तो वो हल्क बन गया था? आफ्टर विच रेडिएशन? गामा वेव. यस. सो in this also you have alpha, beta, gamma rays. These are on the other end high energy radiations. तो इसी में अपना एक लाइट वेव होता है. नाउ लाइट वेव इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. One part is ultraviolet, one is visible, and the another one is infrared. अब ये सब इस क्लास में पढ़ाने की चीजें हैं नहीं. मैं बस ऐसा बोल के निकल जाऊंगा कि इंफ्रारेड अब्जॉर्ब हो जाता है. बट इफ यू नो इंफ्रारेड waves are responsible for all the heat. तो अगर तुम एक आयरन स्त्री, कपड़ा आयरन करने वाला प्रेस, if you will switch on the iron and it will start dissipating a lot of heat, that means that infrared lights are coming from that iron. तो ये जो हीट वाली जितने भी लाइट्स आते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर ऑब्जर्व्ड बाय द वाटर वेपर, ओजोन एंड अदर गैसेस. सो द डीपर it has to go, the least amount of heat it will have. Then there is also this phenomena of scattering. There are small particles which are present in the sky. When the light comes, it is scattered in different directions, and that's why the sky appears blue. पता है सबको? नॉन साइंस वाले, why sky appears blue? नहीं पता है? पढ़ा है स्कूल में 10th में. So when you should go and read, now I'm not going in the details of this. Scattering is a phenomena in which the light is divided. No, लाइट में क्या है, ये सुना होगा तुम लोगों ने, विब्जियोर, बैनिया पिनाला, हिंदी में हम लोग पढ़ते थे. विब्जियोर, ग्रीन, अभी कुछ गलती हो तो देख लेना, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, इंडिगो, येलो, ऑरेंज, रेड. कितना हो गया? 4, 3, 7. हाँ, सो विब्जियोर, these are the 7 colors which are present in the white sunlight. These colors have highest scattering rate. ये बहुत जल्दी scatter हो जाते हैं. That's why you also have read कि why red lights are made up of red color. क्योंकि बहुत कम scatter होते हैं. You can see a red light at a very long distance. थोड़ा वो सब साइंस की बातें हैं, जाके थोड़ा सा 9th 10th का साइंस देखो एक बार. जब साइंस पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे, अगर पढ़ेंगे जब तक. So because of this scattering, the sky appears blue. Then the next topic is spatial distribution of insolation at Earth's surface. How the insolation is distributed on Earth. If you see by the energy, at some point energy is as high as 52 watt per meter square in the tropics, and in the pole it is as less as 70 watt per meter square. So you should first, I'm stressing this because हमें लगता है कि अगर सनलाइट जा ही रही है तो वहां भी बराबर हीट होना चाहिए. But now I hope it is clear to you that even though there is sunlight, and sometimes there is sunlight for 24 hours, the sunlight do not carry the same intensity.
एक जगह तुम्हारे पास 32 वॉट का बल्ब जल रहा है, एक जगह मात्र 70 वॉट का बल्ब जल रहा है. सो अ ह्यूज डिफरेंस. Now, maximum insolation is received over subtropical deserts where the cloudiness is least. This is very, very important. You know, your idea can be that, okay, sir, we understood that insolation in angle पे depend करता है, more the angle, the least insolation will happen there. So one point which is almost always in the range of sun is this equator. So by any measure, equator should have highest amount of insolation. ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है. This doesn't happen because we will see on equator always there is too much cloud. So even when अर्थ रोटेट करता करता सीधा हो जाए, एक जो हमने वो सिचुएशन देखा था, यू रिमेंबर व्हेन अर्थ वाज रोटेटिंग लाइक दिस and it will come like this. So at that point, although the sunlight is falling directly on the equator, or when it will be here, the sunlight is falling directly on the equator, the insolation will not be highest there because of a lot of cloud present at equator. So maximum insolation happens at the subtropical deserts, and that's why you find deserts not on the equator but along the tropics. अभी जाके वर्ल्ड के deserts का location देखो, and you will realize that most of the deserts are present along the tropics, both north and south. ठीक है, ये गलती नहीं करोगे अब. मैक्सिमम इंसोलेशन एट subtropical deserts as tropics. Now, equator receives comparatively less insolation than the tropics, generally at the same latitude. Generally at the same latitude, the insolation is more over continent than over oceans. क्या बोलता है? If you are on the same latitude, so let's suppose you are on tropics on 23-degree line. On the same latitude, the insolation will be more over continents and less over Pacific Ocean में कम रहेगा, Atlantic में कम रहेगा. When think of the same situation, more cloud may be here, stronger winds blowing, so solar radiation received will be less. Similarly, in winter, the middle and the higher latitudes receive less radiation than in summer. Winters में क्या होगा? इस सिचुएशन में कहां पे विंटर है? This region is in winter. This whole region is in winter. Extreme winter. ऐसे तो winter पूरे इस इक्वेटर में ही winter है, but here you will find extreme winters. Southern hemisphere is in winter. So in winter, middle and higher latitudes, this is middle 66 degree, higher latitudes are poles. They receive less radiation than in summer. यहाँ पे अभी ज्यादा रेडिएशन मिल रहा होगा इनको कंपैरेटिवली दिस एरिया. Easy to understand. Now heating and cooling of atmosphere. Atmosphere कैसे heat होता है? This is very important. This will decide everything else. Earth, after being heated by insolation, transmits the heat into the atmosphere in long wave form. Sorry, long wave form. ये मैंने बता दिया, आता है हिट करके लॉन्ग वेव फॉर्म के रूप में जाता है. नाउ एटमॉस्फेयर इज हीटिंग इन टू फॉर्म्स. वन इज कॉल्ड एज कंडक्शन. कंडक्शन प्रोसेस क्या है?
this is your earth surface, and there is a layer of air here. The next layer is above this, the next layer is above this. इस तरीके से एयर के लेयर है. So what happens if you, whenever you will touch a hot surface, the heat will transfer from that body to your body, right? गर्म चीज को छुओगे गर्म हो जाओगे. तो similarly this air will touch the earth surface and get warmer. So when the first layer is now warm, the above layer, the layer above it, it will also absorb some warm. The layer above it, धीरे धीरे, because of the conduct, the touch, the successive layers of earth will get warmer. This transfer of heat continues until both bodies attain the same temperature or the contact is broken. आइदर वो दोनों एक दूसरे, जब तक दोनों बराबर टेम्परेचर में. दिस इज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. कौन सा लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का? फिजिक्स वाले बताओ. ए, इफ यू ब्रिंग टू बॉडीज इन कांटेक्ट, ए एंड बी, दे विल attain the same temperature. zeroth law, right? So वैसे ही अर्थ के साथ होगा. ये एटमॉस्फेयर, एयर धीरे धीरे गर्म होगा. जितना ऊपर जाएंगे उतना थोड़ा थोड़ा कम गर्म होगा. नीचे वाला लेयर सबसे ज्यादा गर्म होगा. This lower layers of the atmosphere are heated by this process of conduction. Now the air in contact with the earth rises vertically on heating. हमने क्या दिखा था? किसी भी चीज को गर्म करो तो वो उठने लगता है. Normal logic. So if you heat the air, it will start rising up and further transmits the heat of the atmosphere. This process is called convection. The vertical heating of the atmosphere is known as convection. ठीक है? Convection transfers the energy is confined only to troposphere. So within the troposphere, the successive layers of the earth will be heated in the form of convection. And then you have advection. Advection is horizontal movement of air. The transfer of heat through horizontal movement of air is called advection. How? तो यहाँ पे देखो, at some place the air is warm. What it will do? It will, with its contact, the next layer will get warmer, और horizontal movement होगा एयर का, तो ये वार्म एयर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगी. Now this horizontal movement of air is relatively more important. हमने पढ़ा था, याद आ रहा होगा तुम लोगों को, मैंने वहां बताया था कि कैसे लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है. लो प्रेशर पे एयर ऊपर जाता है और हाई प्रेशर पे सिंक करता है, और फिर ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करता है, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली एडवेक्शन. याद आ रहा है सबको, और डू आई नीड टू रिमाइंड यू? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एडवेक्शन हो रहा है. In middle latitudes, most of the diurnal variation in day weather are caused by advection alone. ये दिन में हम जितने देखते हैं ना कि सुबह ऐसा क्या होता है, सुबह उठे तो बहुत गर्म रहता है, फिर शाम शाम तक होता है लगता है कि हाँ आज तो ठंडी हवा चल रही है. So daily weather variation is because of advection. In India, in North India, we see loo during summer season. That's also an outcome of advection. Now, terrestrial radiation. अर्थ से जो रेडिएशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं. This terrestrial radiation, the energy that is radiated from the earth that heats up the atmosphere from the below, this process is known as terrestrial radiation. Now, heat budget.
You should know this, that the amount of heat received from the sun is returned to the space. अगर ऐसा सोचो, अर्थ constantly, if it will keep taking heat from the sun, it would have become a very hot body, right? 300 watt का बल्ब हर मीटर स्क्वायर पे जलता रहे और लगातार जलता रहे, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी. अर्थ विल बिकम अ हीट बॉल. सो एक्चुअली क्या होता है, whatever amount of energy that we take in, the same amount of energy is always returned. So there's extreme balance. बजट में हम क्या करते हैं, घर का बजट बनाते हैं तो जितना कमाया उतना खर्च किया, along with savings. So that's your budget. Similarly, Earth also has a budget. It returns back all the solar energy. Now this is very very complicated. 10 बार पढ़ोगे फिर भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको अभी समझ लो एक बार फाइनली, once and for all. Heat budget. So insolation received at the top of atmosphere is 100%. Let's suppose this 100% energy is coming from the sun in the form of short wave. Some of this energy will be reflected, scattered and absorbed. क्या हो रहा है कि 100% का जो 27% है, it will be reflected by the clouds in the very beginning. ठीक है, just follow me. If you try to follow this, it will become very confusing. This radiation is coming, falling on the cloud, and 27% is directly reflected back to the sky. धरती पे इसका आना नहीं हुआ. 6% of this solar radiation is scattered by dust particles present. So 6% of the energy is scattered in the space. If you will add this to 6%, 27, और क्या कह रहा है कि 2% of whatever goes reach up to the earth, that is also directly reflected. कुछ नहीं होता है उसका, absorb नहीं कर पाती अर्थ, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हो जाता है to the sky. So that is very less. 2% of the solar radiation is directly reflected to the sky. Total 35%. So what we get, that 35% of solar radiation is directly radiated or reflected back to sky. ठीक है, जितना आया उसका 35% तो चला गया. Now you are left with 65%. So of this 65%, 14% is absorbed by the atmosphere. ठीक है, एटमोस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे और चीजें हैं. They will absorb that and get warmer. Whatever they want to do, they will do with this 14%. Rest, only 51% will reach to the Earth's surface and will be absorbed by the Earth. ठीक है, of this 51%, 31% तो डायरेक्ट आ रहा है. And you know, whenever there is scattering happening, so scattering is not one way phenomena कि ऐसा आया और ऐसा scatter हो गया. Scattering will happen in all directions. So of that, 6% of the scattered energy will go into the sky. Rest 17% will reach Earth's surface and will be absorbed by Earth's surface. So 51%. ठीक है, आया समझ में? सच सच बताना, कितने लोगों ने पहले इसको पढ़ने की कोशिश की थी और नहीं समझ में आया था? अभी आ गया समझ में?
चलो बहुत आसान है. 15% डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड बाई द रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस, 14% बाई एटमोस्फेयर, 51% इज फाइनली रीचिंग टू अर्थ. अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. अब जाता कैसे है, आने का प्रोसेस समझ में आ गया, जाने का देखते हैं. So we had this 51% radiation with us. Of that, 23% is the radiation from the अर्थ. जितना आया उसका 23% हमने रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज किया. ठीक है, जो हमने देखा था ऐसा शॉर्ट वेव आता है और हाई वेव के फॉर्म में, लॉन्ग वेव के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो जाता है. सो दैट इज 23%. 9% of this 51% is lost in the wave of form of turbulence and convection. Convection हमने क्या पढ़ा था, that vertical movement of air. So air क्या है, वो आएगा यहाँ वाला यहाँ पे आके हॉट होगा, हॉट होके फिर ऊपर कैरी करेगा. सो इस वे में 9% जो अर्थ का एनर्जी है दैट विल बी टेकन बैक बाय दिस टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन. टर्बुलेंस इज मूवमेंट ऑफ एयर, एक तरीके से कहा जाता है, और कुछ नहीं है. देन कंडक्शन, sorry, condensation. What is condensation? Condensation is water vapor का लिक्विड बनना. So in that process, in this ऊपर लिखा होगा, एक मिनट देख लो. यहाँ देखो, of these 17 units are radiated to the space directly, remaining 34 units are absorbed by the atmosphere, 9 units absorbed directly by the atmosphere, 6 units directly, 9 units absorbed through convection, and 9 units through latent heat of कंडक्शन. तो ये अपना टोटल सम कितना हो गया, 51% अर्थ ने जितना लिया था उतना रिलीज कर दिया. ठीक है, ऑफ दैट 34%, एक नंबर मैं यहां ऐड कर रहा हूं, 6, 9 and 19. If you add that, you will get this 34 units which is absorbed by the atmosphere. So देखो, जब ऊपर से आ रहा था तो एटमॉस्फेयर ने 14% लिया. The incoming solar radiations were absorbed 14% by the atmosphere, but when it is reflected back by the earth, it is absorbing 34%. समझ में आ रहा है वो कैसे हमारा वो वर्क करता था? It will allow the short waves to pass and it will capture the long wave. So you see, 14% को ही एब्जॉर्व किया, बाकी सबको जाने दिया. बट व्हेन इट्स गोइंग बैक इन द फॉर्म ऑफ हाई और लॉन्ग वेव्स, इट इज ऑब्जॉर्विंग 34%. ठीक है, समझ में आ गया? नाउ फ्रॉम दैट 48% radiated to the space by atmosphere. Now add this 34 and 14, कितना हो गया? 48. ये वाला 14 और ये वाला 34. ओवरऑल एटमॉस्फेयर में कितनी एनर्जी है तुम्हारी? आने वाला 14 पकड़ के रखा है और जाने वाला 34 पकड़ के रखा है. तो ये पूरा 48% जो है ये फाइनली क्या होगा? अल्टीमेटली तो एटमॉस्फेयर कभी ना कभी रिलीज करेगा, देर से करे जल्दी करे, बट इट विल ऑल्सो बी रिलीज रेडिएटेड बैक टू द स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर 43%. and of this 23% which was reflected back by the earth, of that 17% will directly go to the space
एंड 6% विल रिमेन हियर। फाइनली तुम्हारा हीट बजट कंप्लीट होता है, जितना आया उतना वापस चला गया। ठीक है, तो 65 यूनिट्स फाइनली, 17 प्लस 48, 65 यूनिट्स वी टुक एंड 65 यूनिट्स वी रिलीज्ड। ठीक है, समझ में आया? सच बोलता हूँ, जस्ट आई हैड गॉन थ्रू दिस टॉपिक so many times and it was so confusing that many a time I left that in utter frustration कि ठीक है ये 15% 14% क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, बस इतना मत पता रखो, जितना आता है उतना चला जाता है। but the percentage were given in so complicated method और ये समझना मुश्किल था, लेकिन जब पढ़ाना था तो आई स्टार्टेड लुकिंग डीपर इनटू दिस कि अच्छा हो क्या रहा है, एंड आई होप दैट आई वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस। 65% वाला एक बार फिर, अरे देखो कुछ नहीं है, सब मिटाते हैं एक बार, ठीक है? सब नहीं मिटाएंगे, सब मिटाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। व्हाट वी सॉ, 100% इज कमिंग, 35%, देखो ये सब बीच बीच का भूल जाओ, सब मेन बात याद रखो। 35% is scattered back, only 65% is coming to our earth. Out of that 65, 40% तो already atmosphere will absorb and only 51% will reach earth surface. तो वहां से जो 100 चले थे आते आते सिर्फ 51 धरती के पास पहुंचे, बाकी सब ऐसा हवा में उड़ गया इन डिफरेंट वेज। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये 51% जब वापस जा रहा है तो 34%, इस 51 का 34% जो है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, 34% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा और 17% डायरेक्टली चला गया आकाश में, कहीं नहीं गया। ठीक है, 70% डायरेक्टली वेंट बैक टू स्पेस। नाउ अभी इस एटमॉस्फेयर में तुम्हारी टोटल कितनी एनर्जी बची है ये बताओ। 14% यहाँ वाली और 34% यहाँ वाली, तो एटमॉस्फेयर में 48% बची हुई है। ये एटमॉस्फेयर वाली भी 48% विल बी रिलीज लेटर, तो 17% और 48% 65%। 65 यूनिट्स ले रहे थे, 65 यूनिट्स दे दे रहे हैं। ठीक है, once more long wave earth radiation। देखो अभी ये क्लियर नहीं हुआ, आई थिंक दिस इज अंडरस्टैंडेबल। इतना देखो, ये बहुत स्मॉल नंबर्स में मत जाओ, स्मॉल नंबर्स विल कंफ्यूज यू मोर। फोकस ऑन द लार्जर नंबर्स, बिगर वंस फर्स्ट। मैं ऐसा एक बार इधर ड्रॉ करता हूँ। दिस इज योर अर्थ सरफेस, यहां से 100% चला, दिस इज योर 100% एनर्जी कमिंग। नाउ ऑफ दिस 35% is going back to space। ठीक है, and 65% is coming towards Earth's atmosphere। Of this 65%, again a outlet, 14% is absorbed by the atmosphere। Earth is getting only 51%। ये क्लियर है कि नहीं? एक एक स्टेप नहीं क्लियर करोगे तो मुश्किल है। इतना क्लियर है सबको? 100 आया, 35 स्पेस में गया, 65 बचा, 14 एटमोस्फेयर ने अब्जॉर्ब कर लिया, 51 यहाँ आ गया। अब इस 50, अब हमें ये देखना है कि ये 51 का टोटल फिर क्या हो रहा है, हमको कितना स्पेस को वापस भेजना है ये बताओ।
how much energy now we need more to be reflected back into the atmosphere or into the space? This 65, because 35 we have already sent back to the space. इस 65 जो अपने अर्थ के एटमोस्फेयर में आ गया है, we need to send it back to maintain our budget, right? बजट को 0-0 करना तो क्या, ये 65% भेजना पड़ेगा वापस. नाउ ये 51% जो अर्थ के पास है, लेट्स सी. सो ऑफ दैट 51%, 17% तो ये सीधा एटमोस्फेयर में भेज देता है. ठीक है, 17% will directly go into the space. It will come to the earth and reflect, it will be reflected back by the earth, 17% of this. ठीक है, बचा कितना? 17% चला गया तो कितना बचा? 34%. This 34% is trapped in the atmosphere. ठीक है, it's a long wave, it's trapped into the atmosphere. ठीक है, and that's why we feel warmth. 34% ये trapped है solar energy atmosphere में. After some time, this 34% will be released. अभी बताओ कि टोटल एटमोस्फेयर में कितनी एनर्जी है? ये 14% एब्जॉर्ब्ड एंड ये 34% एब्जॉर्ब्ड है ना. टोटल एटमोस्फेयर में हवा में कितनी एनर्जी तैर रही है? 34 प्लस 14, दैट इज 48. 48% energy is in the atmosphere. This energy will also get radiated after some time. तो ये 65% हो जाएगा. जब हम ये 65% ये दोनों वापस भेज देंगे तो बोलेंगे जितना आया था उतना चला गया. ठीक है, समझ में आया? चलो, अब देखो इतना टाइम लगाओगे एक एक टॉपिक में तो कहाँ सिलेबस खत्म होगा भाई. Variation in the net heat budget and at the earth surface. Variation in the net heat budget. Now this is very easy to understand. A lot of sunlight is falling on in around this tropics. 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में नॉर्थ साउथ में बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है, बिकॉज दीज आर डायरेक्टली अंडर द सन and there will be a lot less energy here. So these are deficit regions, these are surplus regions. Because of this, if there will be no distribution of heat from the surplus region to this deficit region, the equator and the poles will become very hot, and the equator will become very hot, tropics will become very hot, and poles will become very cold, always cold. मतलब इतना ठंडा कि कोई नहीं रह सकता और ये इतना गर्म कि कोई नहीं रह सकता. तो अर्थ का जितना भी whatever weather phenomena that we observe on the earth, the only purpose of that is this, is the dissipation of this heat, is the transfer of this surplus heat to this deficit region. देखेंगे हम कि sometime air will carry that surplus heat, sometime oceanic water will carry this surplus heat. पूरा खेल यही है कि सरप्लस हीट को कैसे भी इस डेफिसिट वाले रीजन पे ले जाओ. सो टेम्परेचर, टेम्परेचर
Heat represents the molecular movement of particles comprising a substance, and temperature is the measurement of the degree of how hot a thing is. Now, today I will not go into this discussion. Last time I was teaching geography, a lot of students get confused between heat and temperature. Heat, I'm just giving you a hint, बाद में ठीक से पढ़ना. Heat is intrinsic to a thing. जैसे कैसा एक, if I give you a common example, if I say you that I have 10,000 rupees or I earn 1 lakh rupees a month. By saying this, you cannot compare that I am rich or poor. But when I say that average Indian income is 10,000 rupees per month, then you can compare कि अच्छा हाँ ये तो सब तो बड़े अमीर लग रहे हैं. So this value which is intrinsic to me, when you are not comparing me with anyone else, that's my heat. And when you are comparing with me with someone else, and you are saying I'm rich or poor, I'm hot or cold, then you are measuring the temperature. So you should always keep this in mind, that temperature is always measured in relation to something. Heat is present in the body, उसको किसी से compare करने की जरूरत नहीं है. तो heat represents the molecular movement of the particle comprising a substance. So if a body is heat or hot, that means that the molecules of that substance are traveling at a very rapid speed. Zigzag, एकदम फास्ट मूवमेंट चल रहा है उसके अंदर. जितना गर्म करोगे उतना वो पानी ऐसे खोलता है ना, तो जितना गर्म करोगे वैसे उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट मूविंग एट अ वेरी रैपिड पीस. एंड temperature is the measurement of degree of how hot or how cold a thing is. So you create a scale that this is 100 degree and you measure, you compare that. हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर में क्या है, उसमें मरकरी है, वो मरकरी के टेम्परेचर से हम कंपेयर करते हैं कि हाउ हॉट इट इज इन कंपैरिजन टू दिस मरकरी. फैक्टर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. Factors controlling the temperature distribution. Here the factors are latitude of the place, altitude of the place, distance from the sea, air mass circulation, presence of warm and cold oceans, and local aspects. कहाँ पे कितनी गर्मी होगी, which place will be how much hot, that is decided by these 5 factors. We are going to discuss all of them one by one. First one is latitude. So the temperature will depend upon insolation. Higher your latitude is, less insolation you will get. So somebody has 0 degree or 23 degree will have more insolation than somebody has 66 or 90 degree for say. This is clear. The second one is altitude. Now हमने पढ़ा था कई बार, higher you go, cooler you feel within the altitude is height. So atmosphere is indirectly heated by terrestrial radiation because atmosphere is getting its heat from the earth. So जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा. So temperature decreases with increasing height. How much it decreases? For every kilometer it will decrease by 65%, which is called normal lapse rate. This is very important. We will come to this again. Normal lapse rate. So lapse is how much is being lost. So every 1 kilometer you will lose 65 degree Celsius. So then the next factor is distance from the sea. This is very important, try to understand this.
दिस इज योर, आई थिंक वी पता नहीं हमने डिस्कस किया था कि नहीं, मैं भूल भी जाता हूँ, इतनी सारी क्लासेस में पढ़ाता हूँ, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इसी क्लास में पढ़ाया था. वी हैव डिस्कस्ड land bridge and sea bridge here in this class. Land bridge and sea bridges. नहीं, ठीक. So देखो, what's happening? Those people who are from Kerala, Tamil Nadu, any coastal region, उनके लिए बड़ा ये मुश्किल होता है. उन्होंने ना गर्मी देखी है ना ठंड देखा है. If you have ever been to coastal regions, no matter, you will find that even people living in Kolkata, they will not feel extreme hot weather or extreme cold weather. अब तो थोड़ा ज्यादा होने लगा है बिकॉज ऑफ द अर्बन हीट phenomena. We will read that too. But especially people living on coastal regions, they always feel that टेम्परेचर ठीक ठाक ही है, कभी ज्यादा गर्म नहीं, कभी ज्यादा ठंडा नहीं. why this happens? This is where the distance from the sea come into the picture. Let's go back to our earlier, the very first discussion of high pressure and low pressure. This is your land, and let's suppose this is daytime. This is your water. Now, one of the property of solid things of land is it will quickly get heated, and it will equally quickly get colder. So देखते होगे normal सा एक, if you have ever cooked anything, your liquid beverage या पानी गर्म करोगे तो it remains hot for longer period of time than your food. सॉलिड चीज ज्यादा ठंडा होता है नेचुरली, वो ज्यादा तेजी से गर्म होता है, ज्यादा तेजी से हीट डिसिपिटेट कर देता है. लिक्विड्स स्टोर द हीट फॉर लॉन्गर पीरियड. सिमिलरली हियर, sunlight will come and it will heat the land surface in daytime. So because of this heat during the days, what will happen here, क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर. ठीक है. And relative to this, or water is not getting warmer so sooner. It will take some time. So here it will be high pressure. ठीक है, ठंडा है, high pressure है. So what will the direction of wind in the day time in the coastal region? Wind will blow from where to where? High pressure to low pressure. ये हाई प्रेशर वाला विंड क्या है? दिस इज कूलर. सो दोज, हैव यू एवर, ये तो सबने फील किया होगा. लेट्स फॉरगेट अबाउट दोस. इफ यू इन द डे टाइम इफ यू गो नियर टू अ पॉन्ड और नियर टू अ रिवर और जस्ट स्टैंड ऑन एनी ब्रिज, ये तो सबने क्या होगा ना, ब्रिज के ऊपर खड़े होते हैं तो लगता है ठंडी हवा आ रही है. So this is happening because this cool air is blowing from this river, ocean, sea to this land. तो यहाँ पे जब गर्मी होनी चाहिए तब ये cooler air will make it cool. So in summers, land will become cool. Now let's consider about what's happening in night. During night, reverse will happen. This land has seen the sunlight throughout the day and now it has become hot. Relatively, Earth has started dissipating, radiating its energy very fast, and it has become cooled. So now here you have low pressure and here you have high pressure. अब wind किस direction में जाएगा? From this direction to this direction, right? From high pressure to low pressure, from land to sea.
So now in the night, this region which was supposed to be cool, वहां से ठंडी हवा इधर गर्म हवा, ये ठंडी हवा वहां से चली गई, तो दिस अगेन इट विल बी हैव मॉडरेटिंग इफेक्ट, बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगेगी यहाँ के लोगों रात में. थ्रू द डे ऑल्सो इन अ लॉन्गर पीरियड सेम. अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम हमने पढ़ा था कि द नेम ऑफ द विंड इज डिसाइडेड बाय द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन. सो ड्यूरिंग द डे टाइम इन द कोस्टल रीजन्स कौन सी ब्रिज फ्लो करेगी, सी ब्रिज. इन द डे यू विल हैव सी ब्रिज, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रहा है, ये क्वेश्चन आता है. इन द डे you will see sea bridge blowing in the coastal region. Opposite to that, in the night time you will have land bridge. Air will blow from land to the ocean. So overall एक मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है. एक समझो कि एक नेचुरल एसी लगा हुआ है, ठंडा है तो गर्म कर देंगे, गर्म है तो ठंड कर देंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है. सो एक इम्पैक्ट बोलते हैं कॉन्टिनेंटल इम्पैक्ट, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट. कॉन्टिनेंटल इम्पैक्ट के चलते क्या होता है, यू विल सी दैट द रीजन्स व्हिच आर वेरी फार ऑफ फ्रॉम द ओशन, they do not have any moderating effect of the ocean. And because of that, in continental regions you will find if it is hot then it will be too hot, and if it is cold then it is too cold, because there is no ocean. पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल से. Finally we have air mass and ocean currents, a moderating influence of the sea. ठीक है. Now air mass and ocean currents. There was a news few months back in the Western USA and Canada. The temperature reached 50 degrees Celsius in some places. सुना था किसी ने? Temperature reached 50 degrees Celsius in Canada and Western USA. The concept, the one concept which was talked again and again was the concept of heat dome. तो क्या होता है generally? Like the land and the sea bridges, the passage of air mass also affect the temperature. We'll read about air mass in detail, but just to give you an idea, जब ये हीट मास चल रहा था ना, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने भी सोचा कि चलो एक बार देखते हैं और लोग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं. आई हैड टू एक्सप्लेन इन सम क्लास. So I generally do this. I do my research before going to the class. So I was looking around. तो क्या होता है, वो जनरली यूपीएससी वालों को यूपीएससी वाला रिकमेंड करता है. तो रिकमेंडेशन में वो अन अकेडमी के कोई बहुत फेमस टीचर हैं ज्योग्राफी के, उनका कुछ वीडियो आ रहा था. बहुत फेमस है, मतलब पता नहीं कुछ ज्यादा ही फेमस है. मैं कि चलो देखते हैं भाई क्या पढ़ा रहे हैं. 30 मिनट हीट डोम पढ़ाया है भाई ने, लेकिन हीट डोम क्या होता है कुछ समझ नहीं आया है. पूरा और जो कॉन्सेप्ट था वो भी मेरा लगा कि भाई ये तो मैं और पागल हो जाऊंगा. तो पता नहीं लोग कुछ ऐसे ही, और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है कि ऐसे ही फैन फॉलोइंग लोगों को. हम पढ़ेंगे हीट डोम क्या होता है और एयर मास क्या होता है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. बट focus here. Like the land and the sea bridge, the passage of the air mass. Now, air mass is something
which has a consistent property. It's a homogeneous package of air. मतलब इसमें तुम कहीं भी जाओ, ऊपर से नीचे, left to right, you will find the same temperature of the air, same humidity. इस तरीके के एयर पैकेज को एयर मास बोलते हैं. Now this air mass can be hot or can be cool. And wherever this air mass will go, and if it will survive over a place for some time, if it is hot air mass, it will increase the heat there. If it is a cool air mass, it will bring cold there. So यही एक एयर मास चलता चलता कनाडा के ऊपर चला गया था, उसके चलते वहां पे हीट हुई. क्यों बनता है एयर मास, क्या और इसके फेनोमेना है, दैट वी विल रीड लेटर. So places which come under the warm will become high temperature. In the places located on the coast where the warm ocean currents flow record higher temperature than the places located on the coast that have cold currents. हमने थोड़ा बहुत देखा था ना पहले, hot currents and cold currents, if you remember. So wherever the hot ocean currents will be blowing, the temperature will be relatively hotter, क्योंकि वो hot water will heat the air in the surrounding, वो पूरा एक एयर मास बनेगा. कोल्ड वाला कोल्ड करता है. ये सब देखेंगे नेक्स्ट हाइड्रोलॉजी में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. नाउ यू शुड रिमेंबर दिस. Isothermals are the lines joining places having equal temp. Isotherms are the lines joining places having equal temperature. This is very very important. बहुत बहुत ज्यादा important है, इसलिए मैंने इधर पहले ही लिख के रखा है. So focus on this concept. Line joining same temperature on the earth is called isotherms. So let's look at this 20-degree line. You follow this line anywhere as this line is going, and this is in the month of January. So on this isotherm means temperature in somewhere here. कौन सी country होगी यहाँ पे? Nicaragua or some other countries, Mexico वगैरह. So here you have 20-degree temperature. Similarly, here in Saharan countries, Malay or MNCs, you have 20-degree temperature. In India also, in this region, the average temperature will be in the month of January is 20 degrees Celsius. The average temperature here is 10 degrees Celsius. The higher you are going, the temperature is declining. ये क्यों इस पे bend होता है, that we will discuss. But you understand the idea of isotherms. On this line, anywhere you go, here you will find 10 degrees Celsius. Here also you will find 10 degrees Celsius on the same month. Average temperature की बात हो रही है, ठीक है. Now isotherms are generally parallel to the latitude. You can see ये जो तुम्हारा latitude, मान लो यहाँ से यहाँ तक तुम latitude draw करते हो, it's almost parallel, but at some point it's deviating too. It's not always like on same latitude you will find the same temperature. The deviation from this general trend is more pronounced in January than in July. More pronounced in January than in July. So let's look at the two pictures. Sorry. See, in January, the lines are deviating. मतलब ये पूरा यहाँ चला गया. Instead of being parallel, the 0-degree in January is here in USA, and it's 0-degree here in around Nordic countries.
बट यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, it's normal, there is no such huge variations. This 20-degree line is almost 20-degree, changing at some places. This 10-degree line is almost 10-degree, less deviation. ठीक है, क्यों हो रहा है वो समझते हैं, बट पहले ये समझ में आ गया, मोर डेविएशन इन जनवरी देन इन जुलाई, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. Hence the effect of land mass and the ocean currents. यहाँ क्या हो रहा है, in the northern hemisphere, land surface area is much larger than the southern hemisphere. Hence the effect of land mass and the ocean currents are well pronounced. हमने क्या देखा था, that land will get warmer easily and it will get colder too, right? And water will get warmer slowly and will get colder slowly. तो देखो, focus here. In July, first take this case. In July, we have summers here. Summer, nahi, summer. So all these regions are getting heat, right? Similarly, these oceans are also getting heat. But as soon as from July, we will start moving into January, these regions will start getting colder. तो ज्यादा जल्दी कोल्ड कौन होगा, विच रीजन विल बिकम कोल्डर इजीली? यहाँ पे बहुत जल्दी कोल्ड आ जाएगा, यहाँ पे कोल्ड आने में बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पे कोल्ड आने में टाइम लगेगा. सो यू सी, the land which was at 30-degree has now become 20-degree at this point, but at the same point on the same latitude the land here is almost at still at 10-degree. तो ये ठंडा हो रहा है but relatively slowly. Similarly here it is 0-degree, but यहाँ पे ये माइनस में जा चुका है. on this about on the same latitude it has went into minus 25 degrees because land बहुत तेजी से ठंडा हो रहा है, water is still holding some amount of heat. So this is called the effect of land. Effect of land mass and ocean currents are well pronounced. In January, the isotherms deviate to north over the ocean. जनवरी में क्या होगा, isotherms will deviate to the north. Now, do you understand why isotherms will deviate to the north? Isotherm क्या हो रहा है, इसको नॉर्मली रहना तो चाहिए था स्ट्रेट, नॉर्मली इसको रहना चाहिए था पैरेलल, but you see it's deviating more towards north because of the land and ocean effects. लैंड जल्दी ठंडा हो, ओशन ठंडा नहीं हो रहा है, तो ऊपर तक तुमको ज्यादा हीट देखने को मिलता है. दिस ये सब ठीक है. यहाँ पे ओवर द लैंड टेम्परेचर डिक्रीजेस शार्पली, द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स साउथ इन यूरोप. यहां से चलना शुरू किया. लेट्स फॉलो अ लाइन एंड दिस विल गिव यू अ बेटर क्लैरिटी. On a particular day in January, we were facing 0-degree Celsius temperature here on this line. As we started moving, we come on land. So here you will have more temperature or less temperature. ये सोचो, more or less compared to this latitude. Less temperature, it's land, it will lose its heat easily. तो देखो यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ है,
So we have started from 0 degree. Here you have -5 degree around. ठीक है, -5 degree temperature होगा इस point पे. Similarly, you keep moving. As we come closer to this, here you have एकदम continental effect है, एकदम बीच में हो गया ना. No, nothing is disturbing it. So here you have -12 degree temperature. Okay, on the same line you come forward and here you will get -12 degree temperature. Similarly, as you move forward, here you have it's even colder. -12 degree से भी थोड़ा ज्यादा होगा इस point पे, about 15 degree, -15 degree or so. But as we come out again on ocean, it's again 0 degree. है ना, ये 0 degree का line ऐसा pass हो रहा है. It's again 0 degree Celsius here. You again move forward and you come here. This point is again the point of, ये कौन सा लाइन जा रहा है, आइसोथर्म में 0 डिग्री वाला. तो यहाँ पे अगेन यू विल फाइंड 0 डिग्री. बट एज यू कम अगेन डीपर इनटू द कॉन्टिनेंटल रीजन, यू हैव टू फॉलो, नहीं, हाँ, यू हैव टू फॉलो दिस लाइन. सो दिस इज -12 डिग्री सेल्सियस. बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया इन चीजों को, एंड इट हैज टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट गो थ्रू दिस कि बोलना क्या चाह रहा है. ठीक है, एंड हियर दिस इज द रीजन ऑफ साइबेरिया, वन ऑफ द कोल्डेस्ट regions in the world. Here you will find -25 degree Celsius एवरेज टेम्परेचर. यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है टेम्परेचर, स्कूल वगैरह बंद हो जाते हैं. -40 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, एंड अगेन इफ यू विल कम बैक ऑन वाटर ऑन द सेम प्लेस, यू हैव 0 degree here. Even in Japan, because it's on the, because of the coastal effect, it is again 0 degree here. Oh, nahi, minus, 0 degree here in this region. समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? पता नहीं भारत में कोई टीचर इस तरीके से पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है. But I hope you are getting the idea. Similarly, you can do the same thing. Look at this map carefully, जो मैंने बताया है, and try to observe here that in July what's happening and why the variation is happening. You start from here 20 degree, but now land is hotter. ठीक है, तो यहाँ पे अब तुमको ये 30 डिग्री मिलेगा. इस रीजन में you will find 30 degree temperature, and as you move forward again it will be less. फिर जब यहाँ आए एक्सट्रीम अंदर, तो फिर यू विल फाइंड 30 डिग्री. ये पूरा में भी 30 डिग्री चल रहा है. यहां से शुरू किया तो सेम 10 डिग्री यहाँ पे था, बट वाटर इज कोल्डर. ठीक है, अभी यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ऑफ थर्मल इक्वेटर, ये समझना बहुत जरूरी है. If you can understand that, you will understand the monsoon pretty well. If you miss that, you will never understand monsoon. Now, finally, this line, variation in temperature is more gradual. This is talking about southern hemisphere, okay? So in southern hemisphere, the variation in temperature is more gradual than in northern hemisphere. Why? ये देखो, साउदर्न हेमिस्फीयर में ये 0 डिग्री है, तो ये पूरा पैरेलल से ही चल रहा है. देयर इज नो मच चेंज. इट्स 0 डिग्री, 10 डिग्री है तो 10 डिग्री है, 20 डिग्री है तो 20 डिग्री है. देयर इज नो ग्रेट चेंज बिकॉज लैंड कम है. सो लैंड का जो इफेक्ट एक होता है, दैट इफेक्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. ऑल द प्लेस इज वाटर, सो इट्स मेंटेनिंग द सेम टेम्परेचर थ्रू आउट द पीरियड. Now you can look at the average temperature between January and July. Here you will find a variation of 60 degree. मतलब it can go
in minus it can go 40 degree and it can again come back into positive 20 degree. ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समर्स में in the same region you have positive 20 degree and in winters you had minus 30 degree. तो वेरिएशन टोटल कितना हो गया, अबाउट 60 डिग्री. सो 60 डिग्री चेंज इन द टेम्परेचर. इन आर रीजन इंडिया the most variation that we feel is about 10 degree, right? या तो 10 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है या फिर 20-25 डिग्री रहता है. the most of the variation is happening in between this period, this region. The coldest and the hottest period is the variation is not more than 10. Some places as higher you go, यहाँ कश्मीर वगैरह में you will find the variation of 20 degrees, so it can go into zero and in summers it can go into 20 degrees. So this is the variation. देख लो जितने हम कॉन्टिनेंटल रीजन में हैं वहां पे वेरिएशन बहुत ज्यादा. दिस विल बी वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, एंड द मोर यू आर नियर टू द ओशनिक रीजन्स the variation is very low. So in Kerala and in Sri Lanka, you will never find a hot or a cold weather. It's like always same. Only 3 degree change from winters to summers. यार है कॉन्सेप्ट समझ में? Now the final thing is inversion of temperature. इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? देखो जनरली what we have seen that the lower atmosphere will be hot and higher atmosphere will be cold, right? Hot and cold. But sometimes उल्टा होता है. The lower temperature, the lower atmosphere will become cold and higher atmosphere will become hot. This happens in very unique situations. Inversion is usually of short duration, but quite common nonetheless. A long winter night with clear sky and still air is ideal situation for inversion. Let's suppose this is your Earth, and in daytime it has got hot because of solar radiation. This is night, and in night it has started radiating the energy. अगर रात में रेडिएशन बहुत फास्ट है, so what will happen? This surface will become colder than this air because it's radiating the energy very fast, and the air then which will come in the contact of this region, this place, that will also start getting cooler, and the air which is above the land, this will remain hot. So जो तुम ड्यू देखते हो कई बार बना हुआ, ड्यू बेसिकली व्हाट इज ड्यू? इट्स कंडेंसेशन. वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो गया है, वो लिक्विड में चेंज हो गया है. वो लिक्विड में क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज नाउ अर्थ सरफेस हैज बिकम colder than the atmosphere itself. So water vapor has condensed on earth. Valleys में ऐसा एक situation देखने को मिलता है. Let's suppose this is a valley. Now what will happen? Sunlight is falling on this valley, in this valley. In the daytime, this region will get more heat, so this will become hot and low pressure will be here. So air will be blowing in this direction. In the night time, the heavier air on the surface will start descending down. ये because of the weight, ये धीरे धीरे heavier air जो है, अभी बस समझ लो इसको, ठीक है? एक बार पढ़ोगे तुमको तो you will get the notes worth writing, okay? So or later maybe there will be some places where we have to discuss this, तो हम उसको discuss कर लेंगे. ये fogs वगैरह तो हो गया. हाँ, inversion takes place in hills and mountains due to air drainage. Cold air at the hills and mountains
produced during the night flows under the influence of gravity. Under the influence of gravity, this cold air in the night will fall back here. तो यहाँ पे वैली में क्या हो गया, पूरा एक कोल्ड एयर हो गया. Being heavy and dense, the cold air acts almost like water and moves down the slope to pile up deeply in pockets and valley bottoms. And warm air will become a valley में नीचे cold air और ऊपर warm air. This is called air drainage and it protects the plants from frost drainage damage. ठीक है. भी ये सब साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में आके. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोरियोलिस फोर्स एंड द एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन. व्हाट इज ईस्टर्लीज, व्हाट इज वेस्टर्लीज, व्हाट इज मॉनसून, ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस. ठीक है, तैयार हो इसके लिए? बहुत लोग मिस करेंगे यार, इतना इंपॉर्टेंट क्लास. मोस्ट ऑफ यू विल नॉट टर्न अप इन द नेक्स्ट सेशन. देन 100 है तो 100 तो आएंगे नहीं. कुछ तुम लोग भूल जाओगे कि क्लास है, कुछ लोग थक जाओगे, कुछ लोग सो जाओगे. That will be the most important class of all geography. Anyway, जो लोग आएंगे वो पढ़ेंगे, बाकी लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे. Let's meet at 3 now. And today we will end this. ठीक है. Our target will be that when we come again next on Saturday, we will start a little bit of class 12th human geography. और 9th and 10th का समेट लेंगे उधर, सब हो जाएगा एक बार ये समझ गए तो. ठीक है, बाय.